हाँ, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए सर, जो लेट खत्म हुआ था ना, सारे टीचर आए नहीं। 2 मिनट रुक जाइएगा। Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Pankaj, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, Ajay, sir. Good morning, Jha, sir. Pankaj, sir. Pankaj, sir, can you hear me? स्टार्ट कर दीजिए अजय सर, अब टाइम हो गया। Okay, so good afternoon, everyone. I, Ajay Kumar, welcome you all for this training session. And the topic for this training is focusing on competency-based education. I would like to take the privilege of this training. I would like to show you some, video first of all, and then I'll come back to the topic. Okay. So let me share my screen first of all to you all, and you just watch this video, which I have selected. I hope it is visible to all. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Just one second. It is voiceless video, sir. Sir, sound is not there.
Right, so I hope कि सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा और समझ भी लिया होगा अच्छे से. Now let me stop this first and then I'll come back. After watching this video, I just want to ask you people, what do you understand by mastery? Because we saw that one word was, coming oftenly, and that was mastery. Because we are talking about the competency, right? So what do you mean by the word mastery? Mastery क्या है और किस चीज में mastery करना है? ये कौन से mastery के बारे में बात कर रहा है? I mean, a video. So I just want you people to give your feedback for this word mastery. Yes, sir. Hello. Is my Yes, voice sir, audible, continue. sir? Okay, Yeah, okay, yeah, okay, yeah. okay. Okay, fine, fine. Sir, I think mastery over the knowledge that they have learned and how much they can use that in practical life, in day-to-day life, how much that knowledge they can use, how much perfectly they have learned that knowledge, and how much perfectly they can use that knowledge. I think that is the thing. Okay. Anyone more would Ajay like sir. to comment? Yeah. Yes, Ajay ma'am. sir, mastery according to me, Yes, Tanuja, ma'am. Continue. Sorry, we cannot hear her voice. I think there's some. Yes, ma'am. हेलो She's back. सर, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे फोन Yeah. में. एक्चुअली मेरे कहने का सेंस था कि अगर मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, देन हमको उसमें मास्टरी होनी चाहिए, उसकी मतलब नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी मास्टरी ये भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि और एजुकेशन में ही अब मास्टर डिग्री कर लिए, पीएचडी कर लिए, ये मास्टरी है. all right. Yeah, I agree, ma'am. और कोई कमेंट करना चाहेंगे इस Mastery is means actually mastery means exactly efficiency in that particular topic या particular just जो भी हम लोग करना चाहते हैं efficiency का complete efficiency. Competency next में Yes, कैसे but competency whether we can use that practically or not, that is the thing. yes, Whether yes, we can it's use that or not. applying the com- things which we have learned is the mastery. Yes, Right, yes, sir. now Yes, Ravi. Applied knowledge. Do you have the now- command on now- that particular work or not? That is called mastery. Now my next question, that is additional to it, because we all are talking about the mastery. How far it is possible for a teacher like us? I mean, what do? We go into the classroom and we teach the subjects. We teach the topic. How far we are concerned about that, whether the student, students of my classroom, let it be the numbers of the student could be 10 also, sometimes it is 15, sometimes it is 30, or sometimes it is 40 also. Are we making sure that all the students got the mastery in that particular topic which you have taught? Are we doing that? no Practically we are. I mean, we must accept that we are not doing that, right? So this topic, which is based on competency, focuses more on mastery. I mean, like, I would like to give you one example. आप सब लोगों ने भी एक ये देखा होगा, एडवर्टीजमेंट चलता है आपका टेलीविजन पे बायजूस के बारे में, एंड दे टॉक अबाउट वन ऑन वन टीचिंग, राइट? वन ऑन वन टीचिंग, ये एक सिर्फ बायजूस का ही नहीं है, उसके अलावा आप टाटा स्टडी और राइट नाउ आज के डेट में देयर आर वेरियस एप्लीकेशन व्हिच using this platform, and they are saying that we are offering you one-on-one teaching. So this is the base of competency based education, and the whole topic which we are going to on which I'm going to give you training is based on mastery and all that. So let's begin. I'm going to share my PPT with you all, and do let me know if my PPT is visible or not. Is it visible? yes sir yes sir the screen is visible PPT is visible, ma'am?
Competency-based education. Yes. Yes. Yes, So sir. this is the topic, competency-based education, and which we are going to learn. We will learn things like which you have already heard, WH word, why, when, where, whose. These are the questions which generally comes in our mind when we are going through any topic. So ये competency based education, why competency based education, what are the benefits? So we have to understand it completely, because competency based education को अगर हम समझेंगे नहीं, so there is nothing, there is no I mean result will be getting coming out of that topic. Now you can see कि कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं या फिर सिखाते हैं या सीखते हैं, तो उसमें लर्निंग एंड टीचिंग दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो हम लोग को ग्रैब करना था, द थिंग्स व्हिच वी आर ग्रैबिंग थ्रू दैट टॉपिक, दैट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अंडरलाइंड फर्स्ट, एंड for that we have underlined this objectives. By the end of this session we will be able to describe the concept of competency based education, or jisko ki hum CBE in short we are calling. Then we will list down the differences between the traditional and competency based education. Suppose we are talking about the competency based education. Now what we are doing is not the competency based education at this time. So what is that? So that is the traditional based education, or traditional based system we can call it. So that is why the differences between traditional and competency based education must be underlined and must be listed down. Next is understanding the need of competency based education. What is the need? Why do we need this competency based education? Is it like the traditional based education is not sufficient to cater the knowledge of students who are coming to school? Is it so? That's why we are moving towards the competency based education. So we will certainly understand the need also of this CBE. Now we will know what is competency. First of all we will know competency है क्या, ये जो बार बार शब्द आ रहा है, competency ये है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. And it is, you can read it here also. Competency can be defined as individual, educational or other life context by using. As in the starting Tanuja ma'am said, sir, mastery is not only in the field of education only. It could be in the field of any sector. Let it be, she talked about the sports. She talked about somebody else could say also that talk about the medical line, talk about the engineering line. So basically it is competency is required in each and every sector, and it also defines the individual knowledge, how much he or she has acquired the knowledge, and how much, till what extent they can implement those knowledge when they are working in any organization. So that is called competency. Now we will move on. Knowledge. अभी हमने जैसे कि knowledge के बारे में बात करा. What is knowledge? Can anyone tell me what is knowledge? How can you describe this knowledge? I know myself. This is my knowledge. That मैं is अपने your आप को knowledge. अच्छे तरीके से जानती हूँ. Very good. Anyone more? Information about Ajay sir, Ajay sir, Hmm. Ajay sir. I'm listening. Now Continue. I want to define the term knowledge. Mhm. Knowledge is defined as in such a way that we keep out darkness from ourselves and put our heart lighted. Very good. Very good. To Anyone more? remove all the darkness. Darkness here it means to remove all the disabilities that lies inside a person and provide him a better knowledge that will be fruitful for the students in the long run, True. as True. well True. as for us as well in the long. I do agree. All right. So, we can also say that knowledge is what it is all about, the conceptual and theoretical understanding of the subject. Am I right? Knowledge is all about the conceptual and theoretical understanding of the subject. Whatever we are learning, whatever we have seen, तो उसका एक concept होता है, उसका एक theory होता है. वो सारी चीजों को अगर हम सीख लेते हैं, then we call it that this is my knowledge.
Now it is also तो visible कैसे characteristic अनुभव कह सकते हैं? हम लोग अनुभव क्या इसे Okay. अनुभव कह सकते हैं? आपने अपने लाइफ में जितना भी अनुभव किया है, कैन वी से नॉलेज? Experience. Okay. Ajay sir, when we Basically, use it is a our visible concept in practical characteristic. term, that is also known as knowledge. Yes. When we use our concept, whatever concept we have gained from something, that when we use in practical term, when we relate that in our life, that is also one type of knowledge. So Is it? basically, we can say that it is a visible characteristic that Yes, can yes, is easily be correct. developed through good competency-based education. Because अगर हमें knowledge acquire करना है, तो हमको क्या करना होगा कि हम लोग को कुछ ना कुछ extra या कुछ ना कुछ other. Because what we have been doing till now is like we have been following the footstep of the earlier. I mean जो भी शिक्षाविद हुए हैं या फिर unless it is getting changed, we never bother to think differently. Yes, but when we are thinking differently to introduce something, we must think about the pros and cons of that step, whatever you are going to implement or not. But we have been like नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही बताया गया तो इसे आगे नहीं करना. ये एक रिग्रेसिव थिंकिंग जो हमारे काम के क्रियाकलाप के बीच में आती है, दैट मस्ट नॉट बी ब्राउट ड्यूरिंग लाइक आप कोई अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज को किसी लेट इट बी इन एजुकेशन ओनली, अगर हम कर रहे हैं तो उसको नहीं आने देना चाहिए. बिकॉज वी शुड थिंक अबाउट द प्रोग्रेसिव रेदर देन रिग्रेसिव. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है. नाउ इसके बाद की बात है नॉलेज के बारे में, मैंने आप लोगों से बात करी. सेकेंड पॉइंट इज लाइक स्किल. One more thing I would like to inform you all, because this training session is of 1 hour, and between this session, I'll be giving you link for each particular topic, for each particular part, not topic, for each particular part. So there are basically 3 parts of this training session, and there are 3 link will be forwarded to you all, and you all have to answer it. That is in the format of Google form, which you can just put your name and all that, whatever the information is required for there, and you just submit it. I will get the result. I'll get the responses as soon as you will be submitting. So there are 3 parts of this training, and 3 parts के लिए 3 लिंक जो है आपको मैं उसमें डालूंगा व्हाट्सएप वाले चैट में या फिर इसके माइक्रोसॉफ्ट टीम वाले में डाल दूंगा. एवरीवन, सो यू जस्ट आप इसको माइन्यूटली देखिए. अगर नहीं देखेंगे तो इट माइट बी यू विल बी मिसिंग द आंसर, करेक्ट आंसर. सो सेकंड पॉइंट इज स्किल्स. नाउ व्हाट इज स्किल्स? स्किल्स क्या होता है? व्हाई वी ऑलवेज शाउट फॉर द स्किल्स? हम अगर बात करते हैं स्कूल की बात करते हैं, व्हेनेवर सर इज हायरिंग एनी टीचर, और सपोज if I were hired, you were hired, or any other teacher were hired, they were having some skill. That is why they were hired. Why everyone who is coming or moving to the school, they are not getting hired? What is the difference between that? क्या उनके और मेरे बीच में क्या अंतर है? तो that is the thing which represents the skill. Now अगर मैं skill के बारे में बात करूं तो skill क्या है? According to me and according to many other educationists, they say that it is a measurable and observable, right? It is a measurable and observable proficiency that is learned through training or experience. Also a visible characteristic. ट्रेनिंग भी लेने का मन है, तभी ऐसे कर रहे हैं कि इम्प्रेस्ड हो जा सके. What is this? Sorry, I cannot. Who is unmuted? Sir, kindly mute it. Hassan sir or Pankaj sir, kindly mute. I was getting some sound. Let me continue. So, what is the skill? It is a measurable and observable proficiency that is learned through training or experience. It is also a visible characteristic that can be easily developed through a good competency-based education. फिर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में जब इतनी बातें हो रही है तो उसको हम लोग एक्वायर कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है उसको भी ऑब्जर्व
कैसे करेंगे, that we have to understand in this. Next is after skill, next is abilities. Now abilities, we all shout for the abilities. हम लोग जनरली इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं और बोलते भी हैं बच्चों के बारे में कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास एबिलिटी ही नहीं है, राइट? Why we are saying so? Because we have been watching them since childhood, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता, we do feel that there is no improvement till now, and that is why he is not able to do so. He will not be able to do so also. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. I told a student in my previous school when I started my career, and I was the hostel superintendent that time. So I called a student that you can't do anything in your whole life. And to my pleasure, that guy contacted me literally 2 years back on my Facebook Messenger page, and he said, "Sir, I'm a doctor. I'm a doctor." And I was the happiest person at that moment when he said he was a doctor. And he said, "Sir," he started telling me that आपने तो मेरे से बोला था तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये वो बहुत सारी बातें. He actually started complaining to me कि आपने मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोली, आपने मुझे डांटा भी, पीटा भी बहुत सारी. Now see, I'm a doctor. So I said, I just gave a smile to him, and I said, "Look, dear, that was for that moment only. It was not because I have seen for last 2 years I was watching you, and I said ki you are having no improvement, and that was you are not able to achieve your goals." He changed. He took that as a challenge. उसने उस चीज को एक चैलेंज के तौर पे लिया और उसने फिर अपने आप को ढालना शुरू किया. And he passed so many examinations. He sat for NEET and all that, and he passed all those examinations. He completed his this MBBS जो उसकी डिग्री थी उसने कंप्लीट करा. He was in 2009 batch, and now it is 2022, 13 years almostly. So I was the proudest fellow that time when he texted me back, and he was asking me ki, why you said like this. But when I made him understand why I said those all things, he understood my emotion and all that, and he said, "Thank you, sir, thank you very much." But he accepted the truth that when you said to me, I took it on my heart, and I started working differently, and I started thinking differently. So abilities, आपके अंदर abilities होगी तभी आपको कुछ भी चीज मिल पाएगा. अब अगर हम ability के बारे में बात करें, अगर definition के बारे में बात करें इसके, तो ability क्या है? It is a vast underlying capacity or talent that is essential to learn and apply knowledge and skills. अब हम जब ability की बात करते हैं तो ability में दोनों चीज अपने आप समाहित हो जाता है, whether it is knowledge or skills. राइट. सो इट इज अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक. हम लोग एबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? ये एक तरीके का हिडन कैरेक्टरिस्टिक है विच वी आर नेचुरली कैपेबल टू लर्न. इट डेवलप्स विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन. और एबिलिटी जो है किसी भी आपको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, उसके विदाउट ही डेवलप किया जा सकता है एबिलिटी को. तो आई हैव डिफाइंड ऑल थ्री थिंग्स, नॉलेज, स्किल एंड आपका ये जो है एबिलिटी. Now this is where I will stop. यहाँ पे मैं stop करूँगा, and I think कि I'll be just moving towards the whatever I have just explained. तो उसका मैंने एक question तैयार करा है. That is of 5 questions. I think it comprises only 5 questions, and whatever the things I have said, I have explained, that will be in there. So kindly attempt those questions and submit it as soon as पॉसिबल, बिकॉज फिर उसके बाद दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी मैं करूंगा. पंकज सर, shall I share in this chat box, Microsoft Team chat box, or in my that Martian's group? Pankaj sir or Hassan sir, are you there? Yes sir, yes sir. You can Shall I share here also. अच्छा, Martian में. No, you can share here also sir, in the chat box. Okay, in the chat box. Okay, so it's better I am sharing here only. मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ chat box में. Hold on, just give me 1 second, sir.
I have posted in the chat box. आप लोग उसको access कर सकते हैं. You can start solving. Simultaneously, there's a small test I am taking. Whatever I have explained, that you have understood it completely or not. So kindly attempt these questions, which is in the format of Google form, and then we will carry on. आगे हम इसके बाद चलेंगे. Ajay sir, do we have to do this right now? Yes, sir. Yes, sir. Right now. It is only 5 questions, sir. Sir, mail ID we have to give there. Pankaj sir, which mail ID? CBSE we will give. You can put the official email ID here. क्या Yes, करना है? sir. कुछ वर्क दिए Or हैं you सर? can give a CBSE digital ID also here. Okay, sir. Fine. क्या करना है पंकज सर? हम लीव कर गए थे टीम से, कट गया था फोन मेरा. मैम उसको आपको मैंने एक लिंक दिया है, उसमें चैट बॉक्स में आप जाके देखेंगे, गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आपको बनाना है. You have to attempt that questions. Kindly inform me as soon as you are completing it, because we will move on. There are 3 parts. We have completed the first part already, and we'll move on to the second part, and that will be followed by the third part also. So there will be 3 tests once we are finishing it. It will be a small test. It is not going to take you much of the time. If you have heard the explanation, if you have seen, if you have participated from the beginning, then only you will be able to answer those questions. Are you all done? I hope. अजय सर, इसमें तो सिर्फ नाम और ईमेल आईडी पूछ रहा है, आपने जो भेजा है इसमें. जी, भरिए अपना नाम, और डिजिटल आईडी भी भर सकते हैं या फिर अपना खुद का भी भर सकते हैं. देयर इज नो इशू. क्वेश्चन कहाँ है सर? आप भर के सबमिट करेंगे तभी तो क्वेश्चन मिलेगा ना. अच्छा, ओके. Are you all done, sir? Shall we move on? I think मुझे move on करना चाहिए, because 5 ही questions थे. Yes, sir. Done, sir. Give us 2 minutes. Just wait, sir, for a few minutes more. Right, We are doing right thing. now. I'm Wait just a minute, requesting sir. everyone. Hold on. I'm requesting everyone. Once you are done, kindly raise your hand. There is a button given for raising the hand, so that I can understand. Because सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो it will समझ में नहीं आएगा. So I can see, yes, Alok sir is done. Indranil sir, all right, good. Just waiting for others also. आपने सर ये पार्ट 3 वाला लिंक भेज दिया है लगता है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन 3 लिखा हुआ है. अच्छा, पार्ट 3 है. तो एक काम करते हैं ना, हम जस्ट लेट मी फिनिश ऑल दिस थिंग्स एंड देन आई विल जस्ट शेयर. ये तो थर्ड पार्ट का है और फर्स्ट पार्ट आपने अभी तो थर्ड बताया. पार्ट जो भेजे हैं तो वही अभी तो सेंड डिस्कस कर दिए हैं. सर. सो दैट व्हाई इट सेंड. आपको इस पर हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस आंसर शेयर कर दिया है. I completed and sent that to you. All right, okay, no issue, ma'am. Though it is, if it is third part. Number 1 part 1 also, sir. Send the part 1 also, because we had completed that part 1. So we need the questions.
I'm sharing. बट ये आपने अभी सिखाया नहीं था हमें. अच्छा. अजय सर, हाँ. अजय सर, सर लास्ट में भी किया अजय जाएगा. सर, I got 3 marks. I got अच्छा, 5 Without marks. explanation, I got 4 marks. I got 5 I marks. got 3. I got 3. This is the competency. This is the competency. बिना Okay. ट्रेनिंग का ही Now, सब competence. I do agree with everyone. Now let me Yes. have the privilege of in training, because I know you all are eager to, tell your marks and whatever you have scored. I'm sharing all 3 links. Earlier I decided that I'll share it one by one, but I'm sharing this link. You can इसमें अभी भी आप उसको बना सकते हो, या फिर later on after finishing the training you can do that. Okay, so I'm saying, जी. Sir, I want to ask something. Which link you are talking about? Because I have joined at 1-2. So that time I have not received link and all. मैम यू कैन चेक आउट द चैट बॉक्स. जो चैट बॉक्स होता है ना ये MS टीम का, उसको आप चेकआउट कर लीजिए. यू विल सी देयर इज अ लिंक, और इवन आई एम शेयरिंग इट इन द मार्टियन ग्रुप. आप ऑलरेडी शेयर्ड. आप लिंक को क्लिक करके आप कर सकते हैं. So that I will. बट नॉट नाउ. लेट मी गो थ्रू पार्ट 2. आई एम गोइंग थ्रू पार्ट 2. Thank you. Alka ma'am, not now. Okay. Ajay sir, I already submitted it. तो इसको दोबारा थोड़ी करेंगे, एक ही बार कर पाएंगे ना. बाकी 2 लिंक कर सकते हैं ना. ऑब्वियसली थर्ड पार्ट तो हम लोगों ने सबमिट कर दिया ना, तो फिर क्यों करेंगे. We are going through this. हम लोग पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं. इन अर्लियर स्लाइड यू सॉ नॉलेज, राइट. हम लोगों ने नॉलेज के बारे में देखा था. वी टॉक्ड अबाउट इवन व्हाट इज नॉलेज. इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने नॉलेज के बारे में बात भी करा. वी टॉक्ड अबाउट द स्किल आल्सो. सो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरी You are not audible, sir. आवाज नहीं आ रही. किस तरीके से इसको इजीली के बारे में भी हम लोगों ने बात करा. देन वी टॉक्ड skills, we talked about abilities also. These all things we have talked about. Now we will move on and we'll see that what is competency based education, because all the 3 topics which we discussed earlier, like knowledge, skill and abilities. Excuse me, sir. Could you please just show the previous slide? Sorry, sir. Sorry to interrupt, sir. Could you just Yes, please, sir. Yes, sir. That slide is not audible also. Please show the previous one. Okay. And sir, be little slow. You are in very hurry. Okay. Thank you, sir. I've got. Done. Shall I move ahead? Biswajit, sir. Are you done, Yes, sir. Yes, sir. All right. Wait, So sir. I let's am move reading. ahead. Sir, you can read that. I will share the PPT in group. Later Sir, on you can read. just take a snap. Take a snap, sir. Sir, why are you taking snap when I said I will share the PPT? Why do you take snap? There's no requirement, I think. But what is competency based education? Because all those 3 points which we discussed, whether it was knowledge, skill or ability, they were talking about competency based education, right? So what is competency based education? उसके बारे में हम बात करेंगे. Now there are 5 points. 5 points working definition of competency based education और CBE. CBE जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में भी बताया कि क्या है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CBE बोलते हैं, राइट. अब जब हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, तो उसमें CBE को इस आधार पे रखा गया है कि CBE इज आल्सो नोन एज मास्टरी और प्रोफिशिएंसी बेस्ड एजुकेशन, which we earlier discussed. I asked also कि what is the term mastery and stand for you mean. आपके हिसाब से मास्टरी क्या होना चाहिए. तो मास्टरी जो है आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका डेफिनेशन दिया, अपने अपने हिसाब से उसको एलोबरेट करने की कोशिश की, एंड at the end we came to a conclusion that proficiency based education, okay, that is proficiency based education, and it is a high quality education system in which students are engaged and motivated to advance up
and demonstrate their mastery. Suppose I'm talking about a person, just let's talk about the, maths. अगर मैं math subject की बात करूं, and if I ask ki, how a teacher from maths, subject will use this CBE to, correct one student who is lower in IQ, lower in understanding, and so on. उसमें और भी कई बुराइयां हो सकती हैं, हम निकाल सकते हैं being as a teacher. लेकिन अगर उसको encourage करने की बात हो CBE के थ्रू, तो कैसे किया जा सकता है? How we will do that? Any idea from maths teacher? Ajay sir, please explain once more what you are trying to say. Yes, I'm asking कि ये जो CBE है, अगर मैथ सब्जेक्ट में अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आए, if you are asked to implement a CBE in math subject, how be, and you have been given a task that one child is quite, weak, and he's not so much, good in, counting table or so on, so on, so on, so on. How you will be dealing with that student? Because generally हम लोगों ने शुरू में ही ये बातें करी कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं, there it could be the number of students could be 20, 30, 40 or less than that. So is it practically possible to focus on each and every child, each and every student, right? So because we are going through CBE, so CBE says that we have to focus on each child, सारे बच्चों के ऊपर. ये नहीं, अभी जैसे हम लोगों ने बात करा तो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल होता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था हमारा, और CBE दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है. इवन इन द वीडियो यू सॉ दैट देयर वर द डिफरेंसेस between a traditional education system and CBE system. What are the things which are different than traditional education system, and what is additional thing which is in competency based education? I gave one example of this ad also कि एक Byju's का है, Tata Study, and there are, various applications has been launched in which they are promoting that we are providing one-on-one classroom, right? Why? Because they are just thinking that this competency, they have taken up this competency based education. They have just you can say कि उन्होंने इसको एक तरीके से hire कर लिया, because they saw the chance of giving mastery to the students more often than traditional education system. Now my question is from the teachers who are taking math, okay, how you will be dealing with a student who is quite weak in your classroom? How you will make him a master? Ajay sir, I am audible, Ajay sir and all? Yes sir. Yes, Umesh sir, you are audible. हाँ सर. Yes, Umesh sir, you are audible. यस सर, ट्रेडिशनल एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं सर, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये देखिए सर, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, और उसी को हम दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्मेट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड कीजिए, या मान लीजिए ऑनलाइन कहिए, या फिर वीडियो ऑडियो से करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. उसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं रह गया है. ट्रेडिशनल हमेशा अच्छा था और अच्छा ही रहेगा. अब जो आपका क्वेश्चन है सर कि आप बच्चों को कैसे मतलब अच्छे से समझाएंगे, तो कहने का मतलब कि सर अगर हमारे पास नॉलेज है, एबिलिटी और स्किल है, जो आपने डिस्कस किया बहुत अच्छी तरह से, तो वो अगर किसी भी टीचर के पास है तो वो उसके आधार पे जो भी चीज समझाएंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड पे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, वो समझा देंगे. हमारे पास अगर उस तरह का एबिलिटी है तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा. अब बच्चे उसमें कैसे मास्टरी हासिल करेंगे, तो इसके लिए ये सर आपको क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. हमने बच्चों को एक क्वेश्चन बताया और हमारे पास उस तरह का एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी है तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा. लेकिन सारे बच्चे उसको कंटिन्यू करें, उसको याद रखें, उसके लिए उनको प्रैक्टिस कराना जरूरी है. एक क्वेश्चन हमने बताया, बच्चों से हम क्लास में 2 क्वेश्चन बनवाएंगे, घर पे 10 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, और सारे बच्चे बनाएंगे और उसको हम चेक करेंगे अच्छी तरह से, तभी उनमें मतलब पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा.
I agree, sir. I agree, and that is why this training is going on. By giving the सर ने जैसे बोला ना अजय मैथ्स के लिए जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आप सब लोग को बोलना है. Yes, sir. Sir, I am just requesting टीचर. मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि एक तो कोई लेडीज टीचर है जिनकी आवाज आ रही है, काइंडली बी म्यूट एंड सबर सर, I'll give you chance. Just wait. अभी और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात. एक्चुअली मैं बस उमेश सर की बात में थोड़ी सी बात बस ऐड ऑन करना चाहूंगा. उनकी बात एकदम सही है. अगर हम लोग किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं, मैं सिंपल सा एकदम प्राइमरी से एग्जांपल लेता हूँ. एडिशन हमें सिखाना है बच्चों को या फिर सब्ट्रैक्शन सिखाना है बच्चों को, ठीक है. तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम उनको सिखा दे, लाइक हम लोगों ने उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, अब हम उन लोगों को ये रियलाइज कराएं कि आप इस चीज को अपने नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो. लाइक आप अपनी मम्मी को देखो और पापा को देखो. कभी भी वो बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, तो जो भी चीज सामान लेते हैं तो उनको जो फाइनल पेमेंट करना होता है वो कैसे निकालते हैं. छोटी छोटी चीजें डिमॉन्स्ट्रेटिव मास्टरी. am I right? आप डेमोंस्ट्रेशन करके दिखला. Yeah, very good. It means just realizing them the practical importance of the particular topic, so that they should understand कि yes, अगर हम ये सीखते हैं तो इससे हमें ये फायदा होगा. अगर एक बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि ये सीखने से हमको फायदा होगा, तो वो उसको हम लोगों से ज्यादा, हम लोग उससे कम सिखाएंगे लेकिन वो ज्यादा सीखना चाहेगा. So this thing should be enhanced. And one thing I would like to add, sir, one more thing. Should I, sir? Yes. Continue. Yeah, sir. You are giving the example of Byju's and the other Tatas and all, sir. So I don't think so that is a competency based education. This is just my view, sir. Please don't take otherwise, because they are just it means advertising it. क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो बायजूस की ट्यूशंस ले करके और क्लासेस ले करके वो फेंका रहता है. उन लोग कोई अटेंड करते नहीं है. ये 1-on-1 2 ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उनकी, सर. I too agree. That's it, sir. And I'm teaching them. Byju's से वो पढ़ाते हैं. Now they contacted me and they asked me to help. I'm teaching to the Byju's student. However, the concept which they are promoting, मैं ये नहीं कर रहा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है. The concept which they are selling in the market, that is based on this competency based education. वो उसी का प्रमोट करते हैं कि 1-on-1 teaching and learning होगा. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक जो कॉम्पिटेंसी सीबीई जो है ना, दैट इज अ प्रूवन 2-on-1. तो इसमें जो है वो एक प्रूवन 2-on-1, मतलब एक नहीं दो टीचर्स पढ़ाएंगे एक बच्चे को. दो टीचर. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करता है वो एक अलग सी बात है, बट बेच यही रहा है मार्केट में. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को वो सेल कर रहा है. वो मेरा पॉइंट था. So you talked about demonstrated mastery, you talked about well-defined competencies and learning outcomes, meaningful assessments, and a positive learning experience. Now, because there are 5 points, I have read only 3. Now the next is differentiated support-based and individual learning needs. This is what I am talking about. Suppose if your child, student has not understood whatever you taught him in the classroom, and if he is trying to connect you, and if he is trying to ask you for the explanation while he is making, like you said ki the revision is and the practice is more required. What if that a student is doing the revision or practice, and if he is feeling the heat of not understanding the topic, and if he is trying to contact you, what will happen? Will it be like a positive attitude will be shown by the, because when we talk about competency CBE, तो CBE में ये मतलब एक इसका आधार है कि आपको बहुत ही कामली जो है ये दिमाग में आपको बना के रखना होगा that you have to cater the student at any time. या फिर फिक्स कर दीजिए टाइम कि आप इस टाइम पे करो, not any time, because nobody knows कि what we are doing at home or what we are doing at different time. But we can fix a time on which उसको बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग करो, and though they are not in the classroom, but still they are served. That is why it is written individual learning needs, differentiated support based on individual learning. अब जरूरी नहीं है कि आपके क्लास में सारे बच्चे
कमजोर ही होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वी कैन टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड। 9A की बात करूं, 9B की बात करूं, 9C की बात करूं, 10A, तो मैं इन सारे बच्चों में बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी नाम ले सकता हूँ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर आई मीन नॉट सो गुड। तो अब वैसे बच्चों में से अगर कोई एक ऐसा बच्चा, जैसे एक बच्चा है लकी इज इन 9A, he always smiles। अब वो ऐसा बच्चा, उसको हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट? तो उसके लिए इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है और अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, जरूरी तो नहीं है कि आप सारे बच्चों को करेंगे, वो उनको अपना अजय सर्विस सर, ऑफर करेंगे, बट वैसे बच्चों को तो जरूर करना है अजय सर, जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट, यस सर, बोलिए। एक्सक्यूज मी अजय सर। यस सर। Ajay sir, Lucky is a special child, sir. Yes. Yes, We sir. cannot categorize other students like Lucky. It means Lucky is in different category and other students are in different category, totally different. I hope, sir. Yes, sir. I Sir, agree. I agree Lucky with is you. a special child. But sir, yes, I Yes, agree yes. with you. I He is a also special agree. child. He is a Sir, special child. Sir, I'm changing Lucky. All right, I'm taking another example. I'm just giving अमन है और एक और बच्चा है, क्या बहुत सारे बच्चों का नाम अगर ले सकते हैं। तो अगर वो बना रहे हैं कोई चीज और उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है, are we ready to serve them at a fixed time? That is the question. That is what CBE says. CBE का जो crux है वो वही है. Are we ready to serve them? Because we know that they are not so good like other students. अगर अनुप्रिया की बात करें, she is quite good in all the subjects. लेकिन अगर उसी से थोड़ा सा लोअर, लकी का तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था। I know he is a very, I mean वो एक अलग केस ही है, but still उसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें, are we ready to serve that? That is why it is written individual learning needs. Next point is learning outcomes. Learning outcomes emphasize competencies. Ma'am, let me finish. Discuss it later on. Let me finish because time will it will extend to till 3 p.m. I know. So let me finish it. Please don't mind. And learning outcomes emphasize competencies that include applications, analysis, evaluation of competencies and content. तो जो लर्निंग आउटकम हमें जो मिलने वाला है, तो उसके ऊपर इंफसाइज किन किन चीजों का, मतलब अगर हम कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से करना चाहें तो क्या क्या चीजें, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, कॉम्पिटेंसीज है, ठीक है, और भी उसमें कंटेंट वगैरह सारी चीज होते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के जो है 6 आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स है, उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। दैट इज क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। इसको लर्निंग आउटकम्स को जो है हम लोग क्लियरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स, अब इसमें हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम टू अचीव लर्निंग आउटकम्स, देन मल्टीपल पेडागोजीज, देन इट इज वैरायटी ऑफ engaging content, then criterion referenced testing, and then that is demonstrated learning outcomes. These are the 6 components which is the functional part of CBE. इन्हीं को काम पे लगाया जाता है, इन्हीं 6 पार्ट्स को CBE में लगाया जाता है। नाउ इम्पैक्ट उसका क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो इम्पैक्ट ऑफ CBE एजुकेशन में उसका क्या इम्पैक्ट है। Or you can see कि communicates expectations to the students. It communicates the expectations to the students. हमारा जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी होता है ना, हम जब से पढ़ाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चा हमारा इतना नंबर लाए, ठीक है। मुझे तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको कि मैं चाहता हूं कि दे मस्ट क्रॉस 90% मार्क। तो ये होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। फिर इनहैंस टीचर लर्नर इंटरेक्शन, हम ज्यादा से ज्यादा अगर इनहैंस करना चाहते हैं, आई जस्ट गिव वन एग्जांपल कि आई टॉट अ चैप्टर फेदर्ड फ्रेंड इन क्लास 8 and I was quite happy, like when I gave them task to bring 5 question each student. तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन बनाया था, चैप्टर के अंदर से बनाया था, और छोटा छोटा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनाया। बट एक लड़की आरुषि is quite, like she had already synthesized that chapter. मुझे ऐसा महसूस हुआ। Sir, you are not audible. Her question
a feathered friend. Ajay sir, you was Am I not. audible now? Now you are audible. Yeah. Am I audible? Right. Actually, ma'am, I was giving example of a student from our school on 8B, Arushi. She has synthesized the chapter, and she put a question which was not in my mind. And when I saw that question, I was my God, ऐसा question वही बना सकता है जो पूरे चैप्टर को अच्छे से सिंथेसाइज कर चुका है. So through that I was knowing कि okay fine, they can make the questions. सारे बच्चों को मैंने खुद से बोला कि आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, 5 क्वेश्चन उस टॉपिक से, उस चैप्टर से बनाइए, और उससे मुझे आउटकम मुझे दिखने लगा कि अच्छा ये हो सकता है, किया जा सकता है. सो दैट इज व्हाट आई एम गिविंग कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा. नाउ इट सेज कि uses creative and learner centric methods and techniques to enhance a students learning. Next is offer flexibility to adopt a variety of strategies based on different types of learning styles of a student. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं. अभी मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में बात कर रहा था. तो मैं जहां तक पाता हूं तो व्हाट आई फेल्ट, आई मीन व्हेन आई कंपेयर्ड दैट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड सीबीई एजुकेशन सिस्टम. सर ने बोला कि ऐसे तो आई मीन कि कोई अंतर नहीं है, बट व्हाट आई फेल्ट कि इट इज मोर प्रोग्रेसिव एंड इट इज मोर टाइम टेकिंग. मुझे ऐसा लगता है ये मोर प्रोग्रेसिव है और ये ज्यादा टाइम टेकिंग है. राइट. नेक्स्ट है आपका असेसेस स्टूडेंट्स ऑन एरियाज दैट दे अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे इसमें क्या करते हैं, आई मीन ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल में वी आर प्रमोटिंग. अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा लक्की आज तक क्या होता रहा है, या लक्की को छोड़ दे, अमन या फिर और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग समेटिव असेसमेंट, वी आर डूइंग अ समेटिव असेसमेंट, एंड इवन इफ दे आर, तो उनको थोड़ा सा अगर पासिंग मार्क्स भी आता है तो दे आर बीइंग आगे के क्लासेस में उन लोगों को बढ़ा दिया जाता है. राइट. सो दैट इज वी मस्ट, उनका कौन सा एरिया जो है जो वो अंडरस्टैंड करते हैं उसको असेस करने की कोशिश हम लोग को करनी पड़ती है इस सीबीई में. आई कैन गेट बैकग्राउंड साउंड एंड ऑन म्यूट जिनका भी ये म्यूट है. हसन सर और पंकज सर, कैन यू सी whose mic is unmute? Now focuses on quality of learning rather than volumes. अब ये चीज आती है जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, हाँ मेरा तो हो गया, आपका हो गया, हाँ हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें जब हम कंप्लीट करने की बात करते हैं तो हम लोग जल्दीबाजी में छोड़ के चले जाते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल केस. ठीक है, जनरल केस कि हम लोग कोशिश में ये रहते हैं कि हमारा वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा काम दिखे, बट उसमें क्वालिटी कितना है, हाउ मच परसेंट ऑफ द क्वालिटी इज आई मीन मिक्सड अप इनटू दैट वॉल्यूम, that we always ignore. ठीक है, तो उसको भी हम लोग को कैटर करना होगा कि क्वालिटी जो है हमारा टीचिंग लर्निंग का, हाउ मच वी आर आई मीन गिविंग इनटू दैट, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा. अब इसका जो है समरी आप लोग देख सकते हैं. व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. जो मैंने लिंक भेजा था, आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा मिक्सअप हो गया, मुझे समझ में नहीं है कि लिंक 1 कौन है, लिंक 2 कौन है, एंड दैट इज वाई उसमें प्रॉब्लम हो गया. अब डिफरेंसेस की बात करते हैं. सर ने बात करी थी, उन्होंने बताया था, इवन सबर सर आल्सो स्पोक, एंड कि डिफरेंसेस क्या है. तो डिफरेंसेस किसके बीच में हम करेंगे, जाहिर सी बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीई तो वी विल टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, उसी से हम कंपेयर करेंगे, जाहिर सी बात. सो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसको हम लोग लाइन अप करने की कोशिश करते हैं. एंड देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन विच आई एम गोइंग टू, जल्दी मैं थोड़ा करूंगा नहीं तो ये टाइम एक्सटेंड हो जाएगा बहुत ज्यादा. आउटकम्स क्या होता है, इसका मतलब आउटकम से लेकर के हम एडवांसमेंट तक चलेंगे. देयर आर 8 पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सो आउटकम का मतलब क्या होता है कि लेट अस डिस्कस कि इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ डू द एकेडमिक एंड लर्निंग आउटकम्स डिफर अक्रॉस these two systems. The traditional system is focused on a narrow range of academic outcomes, where remembering and understanding, that is the lower order thinking skills as per Bloom's taxonomy. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं I'm talking about Bloom's taxonomy. So kindly those who said and those who I mean supports I mean even I also support traditional teaching style.
लेकिन ये मेरी बात नहीं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर है कि इनका जो फोकस होता है वो क्या होता है कि बच्चे ने याद कर लिया, हाँ समझ गया, हाँ ठीक है, उसके बाद उसका थिंकिंग स्किल जो है वो थोड़ा सा लो ही रह जाता है, राइट। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करता है। अलोंग विद द कॉम्प्रिहेंशन विद कंटेंट एंड मेमोराइजेशन आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। These are the points which are considered significant कि मेमोराइजेशन हो चुका है, ठीक है, वो कर, so these are the things which अब जब हम बात करते हैं सीबीई की, the out in CBE are more broader, ठीक है, आउटकम जो है इसका सीबीई में वो ज्यादा ब्रॉडर तरीके से उसको विस्तृत तरीके से बताया गया है, एंड इट इज हॉलिस्टिक ऑल्सो, दे इंक्लूड डीप अंडरस्टैंडिंग। जब तक वो बच्चा उस पार्टिकुलर टॉपिक को डीपली नहीं समझ लेता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द डेमोन्स्ट्रेशन, वो समझ करके उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है, ऑफ स्किल्स थ्रू द एप्लीकेशन। अब एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि सीबीई जो है इम्फेसिस डालता लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल के बारे में। लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल एक टर्म है जिसको कि हम लोग अप्लाई करते हैं, करते आ रहे हैं, बट उसको हम लोग टेक्निकली उसको टेक्निकल नाम नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग को 21st सेंचुरी स्किल को लाइफ लर्निंग स्किल में डाल सकते हैं। उसके अलावा लाइक कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड अदर्स सो ऑन थिंग्स वी कैन ऐड इन दिस आउटकम। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज माइंडसेट। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट कैसा होना चाहिए हमारा भी और बच्चों का भी, दोनों का माइंडसेट, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली कैटरिंग टू द स्टूडेंट। सो माइंडसेट कैसा है हमारा? Is mindset of the learner and educator different in two system? क्या जो mindset है लर्नर और इसका दोनों का अलग अलग है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल एजुकेशन मैकेनिज्म जो होता है वो क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड माइंडसेट। ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वो फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर है, एंड इट इज यू कैन से कि इट इज प्रैक्टिस्ड टू आइडेंटिफाई अचीवर्स एंड अंडर अचीवर्स। इसमें हम लोग अचीवर्स को और अंडर अचीवर्स को मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन द क्लास बेस्ड एंड रैंक एंड मार्क्स, ये सारी चीजें हमारा जो है एक पैरामीटर होता है जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि क्या उसका मार्क्स अच्छा है, क्या उसने रैंक अच्छा लाया है। बट सीबीई में क्या होता है? सीबीई इज बेस्ड ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स in mastering learning outcomes, and it is more responsive and commits to continuous improvement and performances. This is the second thing which I have shared. Now third, what is the culture? Third point is culture. Now let us look at the at how the two different systems deals with culture. They practice in traditional education. It focuses on compliance and order, whereas compliance and order, and where CBE, जब हम CBE की बात करते हैं तो CBE focuses on empowering and nurturing inclusive culture of learning. We can say that the traditional education system follow the procedural and rigid approach, but CBE values students agency and participative approach. इसमें जो उनका पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है वो काफी ज्यादा होता है सीबीई में, बिकॉज उसमें दे आर गेटिंग एनफ टाइम टू इंटरेक्ट विद द टीचर। आई सेड कि एक बच्चा अगर कमजोर है मैथ्स वाला, मैं जैसे मैं बोला था, तो आई रेड इट समवेयर, दैट वाज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव रेड इट ऑन गूगल समवेयर, दैट a maths teacher was taking class, and one student was very you can say कि negligent in study, वो पढ़ाई का या फिर किसी भी चीज में वो बहुत इग्नोरेंट रहता था। बट उसका एक उसका लाइफ था that he loves पोकमैन, पोकमैन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। So what the teacher did, teacher spoke to the parent, and then after he came to know about his likes and all. तो फिर बाद में उसने जो मैथ्स का जो टॉपिक था, जो भी वो टॉपिक था, आई एम नॉट नोइंग कि व्हाट वाज द पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच ही इंटीग्रेटेड विद द पोकमैन, जिसके इंटीग्रेशन के बारे, आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, इवन एनईपी में बात की गई बहुत सारी चीजें। तो उस टीचर ने क्या करा कि उस पोकेमैन के साथ में उस मैथ्स के वो जो भी उसको समझाना चाहता था उसको करके और उसने फिर उसको पढ़ाया, एंड द रिजल्ट वाज क्वाइट पॉजिटिव, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसका जो अप्रोच होता है सीबीई का, दैट इज
CBE values the student agency and participative approach. Participate करवाता है उसको भी, ना कि teacher participate. Teacher participative is like we did it on the board and left on the student ki do it in the copy. No, you do it. I will check it, and even you do it and you check it. I will do the correction work. I will do the मतलब बोल के पहले करेक्शन करवाएंगे और उसको आप सुधारिए कॉपी में और उसके बाद फिर मैं करेक्शन करूंगा. एंड दैट इज वाई आप एक साथ में सारे बच्चों को करेक्शन करवा सकते हैं. क्लास में जितने बच्चे हैं बोल करके अगर आप या फिर बोर्ड पे करेक्शन करवाते तो वो भी. नेक्स्ट दैट इज सपोर्ट सिस्टम. अब जब हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं. हाउ आर द सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस फॉर टू, ये जो दो हम डिफरेंसेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टाइल एंड सीबीई के बारे में, तो इसमें हम कैसे करेंगे. तो कहता है कि द traditional educational system has a need-based support. In this, the students are helped if they are found to be significantly above or below the performance norm. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उनका सपोर्ट जो है, अगर वो सपोज इफ दे आर अबव सिग्निफिकेंटली करके उसको, अगर वो ऊपर है या नीचे है, उसके बाद ही हम उसको मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं. और वो भी ग्रेड लेवल एक्सपेक्टेशन होता है उनका. लाइक स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करें या फिर हम इंटेलेक्चुअली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, जैसे एक लकी का हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, तो उन लोगों के बारे में, या गॉड गिफ्टेड या स्टूडेंट गिफ्ट जो कहते हैं टैलेंटेड, तो बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे हमारे क्लासरूम में होते हैं. इन सीबी की अगर जब बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, तो इन सीबी वी ट्राई एंड एम्फसाइज ऑन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन and timely support to all the students. सारे बच्चों को टाइमली सपोर्ट करना होगा इसमें. और हम लोग को पहले तो वो कैटेगराइज करना होगा, हमको किस पे कितना इम्फेसिस डालना है वो भी आपको कैटेगराइज करना होगा. नॉट लाइक कि पूरे क्लास को एक ही जैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं. दैट इज सीबी सेज. उसके बाद कहता है कि इट ऑल्सो ऑफर्स फ्लेक्सी टाइम एंड एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स. Not audible, sir. रहा है उसको आप तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब उसका पिछला परफॉर्मेंस पाएंगे. आप पिछला परफॉर्मेंस भूल जाएंगे तभी आप उसको एडिशनल सपोर्ट दे पाएंगे, नहीं तो फिर आप उसको नहीं कर सकते. Am I audible now? Audible to others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा स्लो Yes, स्लो sir. थोड़ा स्लो, बहुत तेज है आप, इसीलिए आपका हैंग कर जाता है कभी कभी सिस्टम. Okay, next that is pedagogy. Pedagogy के बारे में हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं एंड बीएड में भी ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है इसको. व्हाट इज पेडागोजी? तो पेडागोजी क्या है, फिर से इसको हम अगर कहें तो इट इज अनदर डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंसेस बिटवीन टू सिस्टम. पेडागोजी भी इसमें आ जाता है जब डिफरेंस कर रहे हैं तो. एंड इट सेज द traditional education system delivers the single curriculum to all students based on their age. Traditional education system delivers the single curriculum to all students based on their age, whereas the CBE offers principle based learning science. CBE जो है प्रिंसिपल बेस्ड लर्निंग साइंस ऑफर करता है. अब लर्निंग साइंस के बारे में बात करें तो व्हाट इज लर्निंग साइंस? लर्निंग साइंस इज एन interdisciplinary field focusing on understanding the education context and strategies that promote learning, relying on insights from the fields such as cognitive science and psychology about how students learn and develop understanding around concepts. अब अगर एग्जांपल में मैं इसके बारे में बात करूं तो एनसीबी क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस integrates the research from how students learn and process information and what kind of learning environment support effective learning. तो ये सारा चीज पेडागोजी का हिस्सा है और उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे सीबीई को इम्प्लीमेंट करते टाइम. नेक्स्ट इज असेसमेंट. असेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लाइक हम लोग बच्चों को जब आगे बढ़ाना है, पीछे करना या वहीं पे स्थिर रखना, उसको जज करने के लिए. असेसमेंट में, असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट इन जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग
The assessment is summative in nature and checks what a student knows. And it is one size fits all approach. एक ही size it is one size fits all approach. But CBE के बारे में अगर हम बात करें तो CBE assessment focuses on assessing on learning and assessing for the it is learner and learning both. क्या आप कर रहे हैं, लर्नर भी वो कितना ग्रैब कर रहा है, ये सारी चीज के ऊपर फोकस करता है. द असेसमेंट इसमें जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है एंड इट इज ऑन गोइंग. इसके अलावा डायग्नोस्टिक भी होता है. डायग्नोस्टिक का मतलब कि कहीं पे अगर उसका एरर है, जैसे एग्जामिनेशन हम लोग लेते हैं तो जब जो क्वेश्चंस गलत बनाया है बच्चों ने, वी हैव डायग्नोस्ड इट ऑलरेडी. अभी टेकिंग like stress, I mean, are we taking at a challenge to make it clear to those students who did it wrong in the examination? Diagnose तो कर लिया हम लोगों ने, but are we doing that? That is the thing which must be implemented in CBE. ठीक है, वो CBE में होना चाहिए. Now it says कि it also aligned to learning outcomes. It demonstrates the transfer of knowledge and skills. It is aligned to student learning part way and rather than one size fits approach. One size fits approach को ये बिल्कुल नहीं मानता और वो पार्ट वे हिस्सों में तोड़ करके आप ये वाला हिस्सा कंप्लीट कीजिए तब हम अगले हिस्से में चलेंगे. आपका ये हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अगले हिस्से में नहीं जाएंगे. तो दैट इज व्हाट द CBE फोकसेस ऑन. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड. प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है, अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में बात करें, it has different standards that determine proficiency of a students. The term proficiency or mastery has different meaning for different systems. Some define proficiency as like 80%. कुछ लोग जो है बोलते हैं कि some says advanced, उसका अलग अलग नाम दिया जाता है. 80% advanced, very good, excellent. So that is proficiency standard, right? In contrast, जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो CBE में क्या होता है? CBE सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल इन डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी एंड होल्ड्स ऑल द स्टूडेंट टू सेम हाई स्टैंडर्ड. Rubrics clearly indicates the achievement catering for evaluating students' performances. Next है आपका एडवांसमेंट. एडवांसमेंट द लास्ट पैरामीटर जो है, इसके बाद थोड़ा सा और समय मैं लूंगा. द लास्ट पैरामीटर इज एडवांसमेंट. तो इन दिस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स आर एडवांस्ड इनटू अ नेक्स्ट ग्रेड लेवल आफ्टर अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे हैव एक्चुअली लर्न. हम लोग को करना है CBSE. पहले तो ये था कि फेल भी किया जाता था, अब तो था कि ये ग्रेड हम लोग वी हैव टू प्रमोट, राइट? दैट वी ऑल नो, राइट? इसमें क्या होता है कि हम लोग सब जानते हैं कि एडवांसमेंट जो है उसको हम लोग कर देते हैं. ये नहीं देखना regardless of what they have actually learned, but we are just बढ़ा दे रहे हैं, right? In CBE system, a student's advancement is not time based. उसमें time based नहीं है. एडवांसमेंट तो उसमें भी है, बट टाइम बेस्ड नहीं. वो एक साल का जो गैप है ना, कि अगले साल इसको करना ही, अगले क्लास में चला जाए, दैट इज नॉट देयर, राइट? इवन इन NEP के बारे में बात करें तो NEP के बारे में मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो जाना है, मैं पढ़ रहा था तो मैं कि इवन अगर ग्रेजुएशन कोई बच्चा कर रहा है, इफ समवन इज परसुइंग ग्रेजुएशन एंड इन बिटवीन दैट ग्रेजुएशन, इफ आफ्टर 1 year वन स्टूडेंट वांट टू गो फॉर अनदर कोर्स, ही हैज द लिबर्टी टू गो डू दैट. उसके पास ये लिबर्टी है कि वो बीच में ब्रेक करके और वो जा सकता है दूसरे कोर्स को करने के लिए. And what if the student does not complete the whole 3 years? So he will get the certificate only for the first year. जो एक साल उसने पढ़ाई किया है तो उसी का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा. This is also included in NEP. ठीक है, तो this is why I am talking about कि advancement क्या होता है. In CBE system, a student's advancement is not time based. It rests on the attainment of learning expectations and demonstrating mastery of the learned skill. तब तक आपको उसमें एडवांसमेंट नहीं मिलेगा जब तक आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते. वट एवर द मास्टर स्किल यू हैव लर्न, यू जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इट, देन यू विल बी एडवांस टू नेक्स्ट लेवल. So these were the 8 points. You can see I have explained, but these are the, I mean, ये एक तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पैरामीटर को अलग अलग तरीके से मैंने उसको एलिब्रेट किया था. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है.
आगे चलते हैं, व्हाई इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट एंड नीडेड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत जो है इतना ज़्यादा क्यों है और इसकी ज़रूरत मतलब कैसे है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है it supports lifelong learning by focusing on both academic knowledge as well as transferable skill, right? And it ensures the students become problem solver, independent learner and successful in new context. एक और पॉइंट मैं बोल सकता हूँ इसमें, दैट इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स एजेंसी, जिसके बारे में अभी बात किया हम लोगों ने, विच मीन्स दैट स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज देयर लर्निंग पेस एंड एक्ट एज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग लर्नर, जो कि हमारा NEP भी वही बोल रहा है। आज जो हम लोगों ने करा है अभी ट्रेनिंग, उसके पहले गीता मैम हैड ऑलरेडी गिवन द ट्रेनिंग ऑफ दैट। सो व्हाट आर द नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब इसका फायदा क्या है? आई थिंक टीचर्स को भी बहुत फायदा है, स्टूडेंट को तो फायदा है ही है, राइट? तो हम लोग अगर बात करें इसकी कि फायदा क्या है, तो इट एम्स टू फोस्टर ग्रोथ माइंडसेट इन स्टूडेंट्स एंड सो दैट दे टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। ओनरशिप उनके पास रहेगा, क्या वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज, एजुकेटर्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एजुकेटर्स को भी जो है एक तरीके का लिवरेज होता है कि हाँ चलिए ठीक है, जैसे वी हैव जस्ट सीन कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था, तो आई हर्ड कि राजू सर, इवन कैप्टन सर आल्सो शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद अस, कि वो राजू सर रात में ले रहे थे, तो एक तरीके का लिवरेज ही है हमारा, फायदा ही है, मतलब हम अपने उसके ऊपर, बट हाँ 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक वो एक हमें उसको पहले भी कर सकते हैं। तो एक कहने का मतलब है कि लिवरेज है, फायदा है हमारा। Equity lies at the heart of competency education to ensure that all students grow and benefit, not just some. इसका भी जो है इसमें हम फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज ये एक दैट इज द कोट, आई विल से, यू कैन सी वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड आई bow down to him all the time when I am remembering him. Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model. ये मेरे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के शब्द हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम टू अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ये शिफ्ट कैसे होगा, बदलाव कैसे आएगा, तो दैट वी शुड थिंक ऑफ लाइक इसमें टाइमली जो है इसमें सपोर्ट इन CV जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोर्ट इन CV इज नॉट अ रिएक्टिव मेजर विच इज गिवन व्हेन अ स्टूडेंट फेल्स। ये रिएक्टिव, जब वो फेल कर गया तो हम उसको दे रहे हैं, राइट? इट इज लाइक सपोर्ट इज ऑफर्ड प्रोएक्टिवली थ्रू आउट द लर्निंग। प्रोएक्टिवली ही उसको देना पड़ेगा आपको। लाइक अब उसमें क्या क्या दिया जा सकता है? रिमेडियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वी कैन गिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट वी कैन डू, इफेक्टिव फीडबैक वी कैन टेक। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी कैन सी। फॉलो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉर स्टूडेंट्स, वो जो आपका ट्रेडिशनल में था, लेकिन यहाँ पे जो है अलग है। एडवांसमेंट इज बेस्ड ऑन सीट टाइम देन मास्टरी इन लर्निंग। ये उसका है। शिफ्ट कैसे, ये पहले था, मतलब ये पहले था, इससे बदलाव हो गया। डज नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब अगर बदलाव की बात करते हैं तो ये है नीड फॉर कॉम्पिटेंसीज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, empowered and inclusive culture of learning, timely and differentiated instruction and support, pedagogical principles aligned to meet needs and goals of the students, transparency with clear and explicit expectation. Implicit नहीं है, explicit है, तो ये जरूर होना चाहिए। Expectation जो है। Benefit of competency based education क्या होगा? So students know exactly what is to be learned, the level of performance they need to demonstrate for mastery and how they are progressing throughout a course. ये सबसे ज्यादा अगर अच्छे से कोई जानता है तो स्टूडेंट जानते हैं। Students feel motivated and enthusiastic when learning targets are clear to them. आप एक एग्जांपल, मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ, एग्जांपल भी देता हूँ, मैथ्स के टीचर भी देते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया
कि मैथ्स में जब पहले पढ़ता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो इवन राइट नाउ आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट स्कूल डेज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज फीलिंग आती थी जब मैथ्स बनने लगता था ना, तो बहुत मजा आता था और लगे 2-3 एक्सरसाइज बना देते थे। लेकिन अगर कहीं एक क्वेश्चन फंस जाता था तब फिर पूरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता था, फिर उसके बाद मन करता था अब उसको छुओ ही नहीं, उसके तरफ देखो ही नहीं। आई हैव फेल्ट इट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट इट, बट आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। सो इट सेज कि स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड एंड enthusiastic when learning target and clear to them। अगर वो टारगेट पढ़ ले रहा है, उसको क्लियर कर ले रहा है, तो उनको नेक्स्ट स्टूडेंट फील empowered when they have say in how they learn and demonstrate proficiency। तो एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, gives flexibility to the student on achieving proficiencies, provides timely support and feedback to the students। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। one to one learning होगा यहाँ पे, promote one to one learning। Now this is end, and thank you to everyone, those who patiently heard me। I hope I have taken much time than the prescribed time। As I have shared the link in the group, मैंने ग्रुप में लिंक ऑलरेडी शेयर। Yeah, thank you, sir. Thank If you, anyone sir. wants Thank to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, thank you very much। Everybody, please hold. I think Please, yeah. Thank you. Is okay. sir, Yeah. yes, Mr. Ajay, just put up your CV, not CV, your presentation on the Martin Yes. group, and somehow Yeah, I have not been able to listen to your complete presentation, so I am not in a position to comment anything. So I'm sure you must have given a good presentation, and just put it up in the group so that people who are interested, they can see that. Okay. all right, Thank you. Thanks for. But you have overshot your time from 1:30. that, You have reached 1:50, and everybody must be cursing you. Then I'm sure. No. No. if it is for their benefit, sir, I think everyone should bless me. If it is for their benefit, everyone should bless No, me. benefit is okay, but if we remain within the time limit, then the benefit will be taken in the right spirit. Otherwise, the moment they will get an opportunity, they are trying to take revenge for this from you. No. Anyway, have you given some assignment also to them? Yes, sir. Three assignments. Three assignments. Achha, Yes, 3 sir. assignments. We kar are diye. did and sent. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So if you have given the assignment, that's okay, but ensure that everybody gives it. After doing the assignment, they give it to you, right? I'll forward the Everybody, report please also, try to, in future, since all the teachers are here, please try to remain within the time limit. We are giving the training, but yes, personal time and professional time must keep I always ensure that I don't encroach on your personal time. So I try to avoid that. So if you remain within the time limit, then it will be good, and everybody will be happy also. Okay. Thank you. Thanks for the presentation. Okay. Thank you, sir. Thank you all, and Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, I have sir. taken. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yes, sir. By the way, Ajay sir, one second. Sir, are you there? अजय सर आप कंप्लीट हो गया। हाँ, Ajay sir. हाँ, हो गया। आप दिया था। 1 घंटा Ajay sir, are you? Am I Ajay